Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh. Students, Bank of Maharashtra Generalist Officer exam result is out. And today I'm going to discuss how you should start your preparations for the interviews. आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, exactly पढ़ना क्या चाहिए, right? So let's start the session. What to study? You should start with the basic core banking concepts. Core banking knowledge से start करिए. The most important topic, most popular topic is the priority sector lending norms. रिटेल लेंडिंग के प्रोडक्ट्स हैं, होम लोन, ऑटो लोन, गोल्ड लोन, एमएसएमई, एग्रीकल्चर लोन्स, ये पढ़िए. क्रेडिट अप्रेजल के बेसिक्स पढ़िए. एनपीए रिकवरी नॉर्म्स, सरफाइसी एक्ट के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. आरबीआई के लेटेस्ट सर्कुलर्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स. फॉर एनपीए नॉर्म्स आईआरएसी नॉर्म्स आप पढ़ के जाइए. केवाईसी एएमएल की गाइडलाइंस इन शॉर्ट पढ़िए, लेकिन डिटेल में आप पढ़ लीजिए. फिर भी इट्स हार्डली 10-15 मिनट्स सेशन. प्लीज गो थ्रू इट. कासा मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज, आप कैसे कासा मोबिलाइज करोगे. क्रॉस सेलिंग बेसिक्स, इंश्योरेंस, एमएफ, म्यूचुअल फंड्स, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को क्रॉस सेल कैसे किया जा सकता है. दैट वाज फॉर द कोर बैंकिंग. उतना ही पढ़िए. अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ बेयर मिनिमम दैट यू शुड नो. उतना बेयर मिनिमम आपको पता होना चाहिए. इन द फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन्फ्लेशन, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट है कितना. अभी आरबीआई की जो आती है बाई मंथली रिपोर्ट आती है, उसमें अकॉर्डिंग टू देम जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हो सकता है. रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, हाउ मच इज द करंट रेट एंड व्हाट इज द इफेक्ट. इसका इफेक्ट क्या है, अगर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. करंट गवर्नमेंट स्कीम्स, सीजीटी एमएससी, पीएमईजीपी, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स राइट नाउ, जो आपकी इंटरव्यूज में पूछी जाती है और बहुत पूछी जाती है, राइट. तो रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस बार बार. बेसिक मार्केट के टर्म्स, यील्ड, कूपन, ड्यूरेशन, बॉन्ड प्राइस मूवमेंट. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यूज. जर्नलिस्ट ऑफिसर में ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रिपीट होते हैं. सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेसिफिक क्वेश्चन सब पढ़ के जाइए. रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कितना प्रॉफिट कमाया है. इफ़ यू नो दैट इट इज़ बेटर. अगर आपको नहीं भी पता, इट इज़ स्टिल फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन इफ़ यू नो दीज आंसर्स, तो ऑब्वियसली यू विल इम्प्रेस द पैनल. एनपीए रेशियो कितना है, कासा का पोजीशन क्या है, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजेशन, क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, या कौन सी स्कीम्स पे फोकस कर रहे हैं, कोई नई ऐप, कोई नया प्रोडक्ट लाए हैं, की प्रोडक्ट्स एंड मोबाइल ऐप फीचर्स, कोई रीसेंट न्यूज़ है, पेनल्टीज, अवार्ड्स एंड न्यू ब्रांचेस हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, राइट. योर ओन एक्सपीरियंसेस. सो 6 to 8 स्ट्रॉन्ग स्टार फॉर्मेट स्टोरीज आप प्रिपेयर करो. So, from your experience, how do you handle pressure if a customer is not satisfied with the services of Bank of Maharashtra? अगर आप काम कर रहे हो, you're a manager, and if a customer is not satisfied, how would you answer that? In achieving the target, if your team is not able to achieve the target, how would you handle that situation? किसी customer की problem को कैसे solve करोगे? How would you lead a team? Managing a credit case, if there is a lot of NPA, lot of defaults at your branch, how would you handle that situation? Fixing a process gap, कोई process में gap है, तो आप कैसे solve करोगे? And exactly these kind of questions were asked in the previous interviews. पिछले जो तीन या 4 बार का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट ऑफिसर का इंटरव्यूज है, उसमें exactly ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने हमें रिपोर्ट किए थे. एक्सपेक्ट अ मिक्स ऑफ टेक्निकल, सिचुएशनल, एचआर क्वेश्चंस. टेक्निकल राउंड में राउंड नहीं है, लेकिन एक ही पैनल में टेक्निकल, सिचुएशनल और एचआर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टेक्निकल में एलटीवी, व्हाई डज इट मैटर, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. टेल अस द डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स. आई होप आपने लेटर ऑफ जो गारंटी वाले टॉपिक्स और लेटर ऑफ क्रेडिट वाले टॉपिक पढ़ रखे हैं, कोर्स में अवेलेबल है. हाउ डू यू असेस वर्किंग कैपिटल प्रपोजल, explain NPA classification and provisioning, what are IRAC norms, what is DSCR, how do you do stock statement verification,
Tell us about KYC risk categories, difference between term loan and CC. How do you monitor MSME account? These are exact questions asked in the previous interviews. In the situational, exactly students ने हमें report करे थे. A customer is unhappy with slow loan processing. How would you handle that situation? Your branch is missing CASA targets. How would you fix it? A borrower is delaying stock statements every month. How would you handle that situation? A colleague is not cooperating with you. How would you handle the situation? And for the banking awareness, what is the impact of RBI's latest monetary policy? Exact यही question पूछा गया था multiple times in the previous interviews. Why bond yield are rising and falling? Bond yield rising, why it is rising, why it is falling? Exact question. And we are going to answer these questions. I mean, सारे questions के answer, we are going to make the answers in the interview capsule, and that is available for free. Why NPA rise in retail MSME? How UPI is changing the Indian banking industry? HR related questions. Why Bank of Maharashtra? Why, what is the role of generalist officer? What are your strengths and weaknesses? Biggest mistake that you have done in your career and what it taught you? Where do you see yourself in the next 5 years? And what else you must do for these questions? I'll be providing you a proper PDF. Don't worry, within like a day. So dress formally, formal shirt, trousers, clean shoes, no loud or colors or patterns, right? Wear solid shirts, don't act rehearsed, be straightforward, do not try to memorize answers. That is why I try to provide PDF for interview preparations. Interview preparation का मैं study material इसीलिए कोशिश करता हूँ कि ना provide करूँ, otherwise you will memorize the answer, which is very bad for your interviews. You need to understand the concept, and on the basis of the concept, you need to answer the questions, right? फाइनल वीक स्ट्रैटेजी आरबीआई की गाइडलाइंस को ही आप जो है प्रिपेयर करो. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र. Go through the recent quarterly result of Bank of Maharashtra. If Bank of Maharashtra in the news, go through it. And that's what you should be doing, right? Common mistakes. The most common mistake, according to me, is the students, they memorize answers. Do not memorize answer. That is the most stupid mistake hai. वो मत करो, right? So practice the interviews, use a camera, use a mirror, and try to record yourself. There is an interview preparation capsule. We'll be making it. It'll be available in the description. You need to fill a form for all our students, right? And you'll be getting the this interview preparation capsule in your email. We'll try to send it on a daily basis, right? And if you need mock interviews, let us know. We'll be providing you the mock interviews. So it'll be available, right? And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. If there is any doubt in your mind, please let me know in the comment section. That's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.